Namaste. I'm Dr. Mona Patel, naturotherapist and diet consultant since last 16 years in Mumbai. Today we are going to talk about a very much sensitive topic, that is infertility. Let's discuss exactly what is infertility. Infertility means not able to conceive. A woman cannot able to conceive a natural way. So that is called infertility. An infertility problem totally because of two factors. That is, one is a male factor and second is a female factor. So these two factors are responsible for infertility problem. It's very common problem in Western countries or the European countries. But let's see why it happens or occurs more in the country like India, where the religious things are there, the customs are there, the relations are really very matured in India. But still today, unfortunately, we are facing a very high level of infertility, specifically in the couple stays in the metro life. It's in research, like around 60 or you can say more than 60% couples stays in the metro cities are facing the infertility problem, and continuously they are visiting the IVF and IUI clinics. So what is the basic reason or the cause for increasing this problem? Let's see. As I said, it depends on the two factors. First one is the male infertility and second is the female infertility. So first we start with the male infertility. It's something new for some people, really in India, because they are also believe only in the female infertility. It's like a myth actually. See, basically जब जो बच्चा आता है, जन्म होता है, तभी वो मेल और फीमेल को मिला के ही होता है. कभी सिर्फ अकेली माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है बच्चे के जन्म के लिए. Father's sperm and mother's ovum. The two things combine and then a child comes to the world. You know. So सिर्फ एक औरत को बाज है कहना is not at all true. As I said, the male infertility, the male factor is also equal responsible for the infertility ratio. What is the main root cause for the male infertility? The basic two things which creates the male infertility. The first one is low sperm count in male, that is oligospermia, and the second thing is the low mortality of sperm, that is the abnormal sperm, right? These two basic things are the main responsible factor to create the infertility in male. Other than that, there is also some other reasons. They are like, you can say, अगर कोई male long term से किसी medications पे है, like a diabetic medicine or the insulin medicines, or if he suffers with some STD disease, then he must be on some medication. That is also the reason. इसके अलावा काफ़ी टाइम मेडिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी टाइम अगर मेल में लो स्पर्म काउंट है तो उसके लिए वो मेडिकेशंस पे रहते हैं. तो एक साइड इफेक्ट के जैसा ऐसा देखा गया है कि अगर हम स्पर्म काउंट बढ़ाने की मेडिकेशंस ले रहे हैं तो इट रिवर्स अफेक्ट्स ऑन द मोटिलिटी रेट ऑल्सो. सो अगर किसी चीज़ को बढ़ाने की हम मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी चीज़ को वो दूसरी चीज़ को घटा भी रहा है. So there is also a medication which affects the male infertility rate. Apart from that, one another problem which is commonly seen in the male is, you can say, a problem which is varicocele. Varicocele is a problem where varicose veins in your scrotum get inflamed. यानी कि जो स्क्रॉटम में हमारी वेन्स रहती है, जो शुक्राणु को परिवहन करने में या बनाने में काम करती है मेल में, वो या तो सिकुड़ जाती है या उसके ऊपर सूजन आ जाती है. बिकॉज ऑफ दैट जो मोर्टालिटी रेट है वो मोटिलिटी रेट कम हो जाता है. स्पर्म्स जल्दी डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं. उनका जो एक ट्रांसफर प्रोसीजर रहता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि वो आगे तक बाहर जा ही नहीं सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक रीजन विच क्रिएट्स अ मेल इनफर्टिलिटी. देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कोई नेचुरल तो नहीं होते हैं, और यू कैन से ओनली 10% मेल में ये नेचुरल होते हैं, इनबॉर्न रहते हैं कि शायद वो बॉर्नली ही उनके अंदर
sperm counts में प्रॉब्लम है, quality of sperm counts are not proper, the quantity of sperm counts is not proper, so that is the only reason in 10% overall, but rest 90% males में ये problem create किया हुआ रहता है. Now we are talking about the reasons why the low sperm counts and the low sperm motility rate. As I said, this problem is mainly rising in the metro cities, where the people are overstressed, hyper, anxiety, uneven food pattern, wrong lifestyle. Basically यही सारी चीजें हैं जो fertile rate कम करती है, rather it is in male or female you can say. But specifically हम अभी male factor की बात कर रहे हैं. इसके अलावा a very high use of tobacco, alcohol, chain smoking, these are also some very important root cause to create the infertility in male. तो अगर आप समझ रहे हैं कि अगर ये सारे चीज़ों से आप फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉब्लम की हल आपके ही हाथ में है. जो गलत तरीके से आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही इरेगुलर है, आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस और जंक फूड और फास्ट फूड आ रहा है, तो यू नो हाउ टू ट्रीट योरसेल्फ. प्रॉब्लम यही भी सॉल्व हो सकता है. तो ये जो सारे रीजंस है विच क्रिएट्स इनफर्टिलिटी इन मेल्स. इसके अलावा भी मेल में इनफर्टिलिटी होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मेट्रो सिटीज़ की फास्ट लाइफ जिसमें कपल्स एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं. अगर हस्बैंड ज़्यादा टाइम लैपटॉप के ऊपर बैठा रहता है, वो भी अपने गोद में लेके जो हम लैपटॉप बैठते हैं बेड पे सोफे पे, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर टेस्टिकल्स. Even I can say the fashion industry affects the infertility. आजकल जो लड़कों में फैशन आ गई है ज़्यादा टाइट जीन्स पहनने की, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी फिजिकली अफेक्ट कर रही है, बिकॉज आपके टेस्टिकल्स पे बर्डन आ रहा है, वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं. एक्सेस हीट जो वहाँ पे जनरेट हो रही है तो स्पर्म बन ही नहीं रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रॉयड होके आगे मोटिलिटी रेट तक तो पहुँचने की बात ही नहीं आ रही है, आपकी क्वालिटी ही प्रॉपर प्रोड्यूस हो रही है. तो काफ़ी हद तक फैशन इंडस्ट्री आई कैन से इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी. तो ये सारे जो बेसिक रूट कोज है, अगर आप इसे पकड़ के डायग्नोज करते हैं तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी प्रॉपर रूट कोज पता चलता है और टाइमली आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा भी हमने देखा है कि आजकल कैसे हो गया है कि कपल्स एक तो लेट मैरिज करते हैं, अपना करियर बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं. इट्स अ गुड थिंग नो डाउट, बट इट रिवर्स अफेक्ट ऑन योर फर्टिलिटी रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट सम स्पेस, they need some time after the marriage, they want to settle down in their life. तो प्रॉब्लम होता है so many contraceptive things they are using. That is also again the major reason to create the infertility. आपकी बॉडी जब वो नेचुरल कंसीव कर रही है तो उसे नेचुरल एटमॉस्फेयर चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, बट आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर उसे देख रहे हैं कि नहीं भाई अभी नहीं, 2 साल तक हम फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, 2 साल तक हम मेंटली कैपेबल नहीं है, तो बाद में बच्चे के लिए सोचते हैं. और वही जो बाद में सोचने के लिए आप जो भी तरीका यूज करते रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और काफ़ी सारे आजकल रहते हैं यूज करने के लिए चीज़ें, तो ये जो सारी चीज़ों का ओवर यूज होता है, ओवरडोज होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट कोज टू क्रिएट द इनफर्टिलिटी इन मेल और फीमेल. यू कैन से बोथ द थिंग्स आर गो पैरेलल ओनली. तो ये सारे रीजंस आप ध्यान में रख के सोचिए कि क्यों मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है.